to do one of the most important philosophers, not just in the context of the political science exam for CSS, but generally in the Western political philosophy, कार्ल मार्क्स. और इसके दो तीन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो although they're all connected, लेकिन वो दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे. So the first of these concepts is the theory of alienation, and in this is the broader कॉन्सेप्ट जो हम बेसिकली हर अपने क्वेश्चन में करते हैं कि हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अंदर आप आइडियोलॉजी और फोकस को लिखते हैं. यू कैन चेंज दिस फोकस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप एलिनेशन ऑफ लेबर पे सवाल आए तो एलिनेशन पे कर दें. अगर दूसरे पे सवाल आए हिस्ट्री किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू गाइज इन द नेक्स्ट टॉपिक. जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे करेंगे तो वहां पर आप एलिनेशन ऑफ लेबर की जगह हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म लिख सकते हैं. But anyways, you are already familiar with this stuff. Now let's jump directly to the concept. So basically, it's very important to understand the context in which Karl Marx was writing his philosophy. और आपने एग्जाम में भी इसी तरीके से एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग बनाए. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जर्मनी में अभी नई नई आई थी और ब्रॉडली यूरोप में भी अभी नई नई किक इन की थी. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्न्ड द होल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप अपसाइड डाउन. Prior to industrial revolution, people used to live in self-sufficient communities largely. Trade exist करती थी, लेकिन for instance आप अपने अपने गाँव में छोटे छोटे फार्म्स पे लोग रहा करते थे, उसमें वो प्रोडक्शन खुद करते थे, अपने कपड़े अपना खाना वो खुद जो है वो जनरेट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, कंज्यूम करते थे. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो लार्ज स्केल फैक्ट्रीज डेवलप हो गई. जब फैक्ट्रीज लगी तो फैक्ट्रीज वर एबल टू प्रोड्यूस बेटर स्टफ एंड चीपर स्टफ, relatively cheaper stuff compared to के वो जो इंडिविजुअल वैसे कर सकता हो, और उसकी वजह से वो मार्केट में आना शुरू हो गई. तो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान खुद से चीज बनाया करता था अपनी सेल्फ सफरिंग कम्युनिटीज के लिए, वो खत्म होना शुरू हो गया और एक इंडिविजुअल की बनाई हुई चीजों की भी रेलेवेंस कम हो गई. तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई जो वुड कटर है और कोई क्राफ्ट्समैन है, वो अगर एक कुर्सी बनाया करते थे दो लोग मिलके, तो वो कुर्सी एक कुर्सी बना पाते थे 2 दिनों में या 3 दिनों में, जबकि एक फैक्ट्री दिन में 150, 200, 300 कुर्सियां बना रही होती थी. तो दीज पीपल वर आउट कम्पीटेड हु यूज्ड टू ऑपरेट ऑन देयर ओन. तो वो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हुई. डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद ये कि एक बंदा पूरा काम खुद नहीं करता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर. द प्राइमरी फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज कि उसके अंदर डिवीजन होगी काम की. सो प्रायर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर कोई बंदा एक टेबल बना रहा है तो पूरा टेबल वो खुद ही बना रहा है, जबकि इंडस्ट्री के अंदर जैसे फॉर इंस्टेंस ये फोर्ड की फैक्ट्री वैसे तो असेंबली लाइन है, बट इट सर्व्स द पर्पस कि हर बंदा एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है. कि अगर एक बंदा बोल्ट जोड़ रहा है तो वो एक बंदा बोल्ट ही सिर्फ फिक्स करेगा, अगर एक बंदा उसकी डेंटिंग कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके वही काम करता रहेगा. सो स्पेशलाइज्ड काम होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था मैस प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर गुड्स, और यानी बहुत बड़ी तादाद में ये प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. अब जब ये बहुत बड़ी तादाद में प्रोड्यूस होना शुरू हुए तो इसका मतलब कि एक इंडिविजुअल वर्कर, एक इंडिविजुअल बंदा अब खुद सरवाइव नहीं कर सकता, उसको फैक्ट्री में ही आके काम करना पड़ेगा. अब कैपिटलिज्म के ऊपर सबसे बड़ी क्रिटिक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के ऊपर जो मार्क्स ने की, उसको समझने के लिए पहले आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो किस तरीके से डिफाइन करता है ये समझने की कोशिश करें. अकॉर्डिंग टू मार्क्स there is a thing called means of production, and this will repeat in Marx's philosophy a lot of times. Means of production are not the final product. एक final product है जिसकी कोई कीमत है. This pen is a final product and it has a certain price. This watch is a final product and has a certain price. Everything that you see, generally जो goods हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उन वो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और उनकी कोई वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू. लेकिन उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो जितनी इनपुट्स लगी हैं वो है मींस ऑफ प्रोडक्शन. फॉर इंस्टेंस मींस ऑफ प्रोडक्शन कुड बी लैंड, फर्टिलाइजर्स, फॉर इन केस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. तो फूड प्रोडक्ट्स इज अ फाइनल प्रोडक्ट, बट लैंड एंड फर्टिलाइजर्स आर द मींस ऑफ प्रोडक्शन. इसी तरह जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके अंदर फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर यूज होने वाली मशीनरी, these are means of production.
और इनको यूज करते हुए फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बनती हैं. नाउ who owns these means of production basically is at the top of economic pedestal. तो जो लोग means of production own करते हैं वो डिटरमिन करता है कि क्या बेसिस है उस सिस्टम की. So in capitalism, capitalist class owns the means of production, who he calls bourgeoisie in German. So bourgeoisie or the capitalist class own the means of production. यानी उनके पास फैक्ट्रीज हैं, उनके पास मशीनरी उनकी है, लेकिन वो खुद मैनुअल लेबर नहीं करते. वर्किंग क्लास, जिसको वो प्रोलेटेरिएट कहता है, प्रोलेटेरिएट क्लास बेसिकली चूंकि वो खुद इंडिविजुअली अब सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रोडक्ट से बेहतर और ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज में बनती हैं, therefore they are forced to work in those factories on the means of production. So these workers, these proletariats don't own the means of production, but the only thing that they can give to them is their labor. यानी कि वो जाके मेहनत करेंगे, वो डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर अपना हिस्सा प्ले करेंगे और उसके बदले में उनको अपनी वेजेस मिलेंगी और जो कि बहुत लो वेजेस होंगे. सो मार्क्स के नजदीक there are two classes in industrial capitalist system. First is the capitalist or the bourgeoisie class. They own the means of production. The other is the proletariat or the working class. They don't own the means of production. Hence, in order to survive, they have to work in the factories of the capitalist class, and the only thing that they can give there is their labor. यानी अपनी मेहनत, अपनी मुशक्कत ही दे सकते हैं वो, जिसके एवज उन्हें wages मिलती हैं. But these wages are generally very low because capitalist class का फायदा ये है कि वो का इंसेंटिव ये है कि वो wages कम रखें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें. और कैपिटलिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ऑपरेट करता है बिकॉज ग्रीडी capitalists, according to Marx, would want to always maximize their profits. Hence, wages will be low and they will be given just enough for these people to survive. And that is why he calls this wage slavery. And this is this concept के हाँ आप force नहीं हो labor करने के लिए, लेकिन because you don't have any other option for the workers, hence they are forced to work because otherwise वो survive ही नहीं कर सकते. Otherwise they can't fend for their families. तो वेज स्लेवरी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिफाइन होता है. सो दिस इज अनदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स फील डिस्कनेक्टेड एंड वर्कर्स बिकम साइकोलॉजिकली, क्रिएटिवली एंड मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड, एंड उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम. दैट इज हिज थ्योरी ऑफ एलियनेशन. और हमने अभी तक जितना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है इसको हम इस थ्योरी के साथ अब कनेक्ट करेंगे. So according to Marx, there are 4 types of alienation that a worker experiences. Alienation comes from the word alien. Alien का मतलब होता है कि कोई चीज जो distant हो, जिससे आपका ताल्लुक ना हो. तो alienation का मतलब यही कि separation या connection ना होना और disconnect होना. This is in the context of exploitation. The first of these is the alienation of the worker from the product of his labor. That is to say कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर एक वर्कर बहुत मेहनत करता है. वो दिन रात, एक फॉर इंस्टेंस अगर हम एक चेयर की एग्जांपल लें या टेबल की एग्जांपल लें या आप मॉडर्न को एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एक गाड़ी की एग्जांपल लें, तो एक वर्कर जो है वो सारा दिन उसके टायर जोड़ रहा है या बोल्ट जोड़ रहा है या उसका मैकेनिकली कोई काम कर रहा है, जो भी उसका टास्क है, या पेंट कर रहा है. और ये वर्कर्स जो हैं, इंडिविजुअल वर्कर्स, इनकी मेहनत की वजह से, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से वो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलती है. कोई गाड़ी या चेयर या टेबल या कोई भी फिनिश प्रोडक्ट निकलती है. लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन के निकलती है वो फिर उसे मार्केट करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, उसकी मार्केटिंग होती है, फिर उसके बाद उसको मार्केट में डाला जाता है, तो वो काफी महंगे दामों बिकती है. अब वो इस तरीके से बिकती है महंगे दामों के, वो जो वर्कर्स जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाया वो खुद उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. दे कांट अफोर्ड दैट प्रोडक्ट. Hence they are alienated from the product of their labor. उनकी लेबर से निकलने वाली जो प्रोडक्ट है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते. तो that's the first form of alienation. The second is from the act of production. इसके अंदर बेसिकली आइडिया ये है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया, prior to industrial revolution, people used to perform the duty of making the whole product. वो खुद ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे. बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैक्ट्रीज बनी तो उसको रिपीटेटिव टास्क में ब्रेक डाउन कर दिया गया.
नाउ दिस मीन्स दैट दे हैव वर्कर्स की अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंजेन्युइटी नहीं होगी, वो एक एंडलेस बोरिंग रिपेटिटिव टास्क में लगे होंगे जिसका एक साइकोलॉजिकल कोई सेटिस्फैक्शन वर्कर को नहीं मिलेगी. सो इमेजिन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फ्रॉम 7 AM to 8 PM, शायद इससे भी ज्यादा, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टाइम पे होता हो जब नई नई इंडस्ट्रीज लगी थी, एंड जस्ट पेंटिंग वन पार्ट ऑफ द लार्जर मशीन and just doing that for every day for 15 hours, 7 days a week and 365 days a year. Imagine the kind of psychological strain and psychological dissatisfaction that this would endow your mental capacities. तो वो यही बात कर रहा था मार्क्स के काम के अंदर वो psychological satisfaction नहीं है, and he says that workers are simply become cogs in this gigantic machine. The third is the alienation of workers from their species essence. Species essence का कॉन्सेप्ट एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, और मार्क्स के नजदीक इंसान कोई आइसोलेटेड आइडेंटिटी नहीं है. We're not like animals के जो एक ही काम सारी उम्र करते हैं और उनकी एक सोशल लाइफ होती है. इंसान की स्पीशीज में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं कि उसके इंसान के मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं. You like sports, you like poetry, you like to go out, you like to study different things, you like to work, and काम में भी आप चीजें बहुत डिफरेंट करते हैं. तो ये इंसान की एसेंस है, इंसान की नेचर. लेकिन और इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंजेन्युइटी, योर एबिलिटी टू शेप थिंग्स हाउ यू वांट टू चेंज थिंग्स, दे गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस एंड सेंस ऑफ मीनिंग टू लाइफ. लेकिन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने ये सारी चीजें इंसान से छीन ली हैं, वर्कर्स से. Workers can no longer shape their surroundings. They cannot put their creativity and ingenuity into their work because वो उन्हें protocols follow करने हैं जो उनके capitalist bosses ने उन पे enforce की हैं. They have no say or control whatsoever of their own. और चूंकि सिस्टम इतना exploitative हो गया और इतनी restrictions लग गई हैं और वो survive नहीं कर सकते अगर वो बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ एक ही काम, एक ही रिपीटेटिव टास्क कंटिन्यूअसली करेंगे. सो इंसान की प्लुरलिटी ऑफ इंटरेस्ट की चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, द एबिलिटी टू शेप थिंग्स अराउंड यू, ये वर्कर्स की पूरी नहीं हो रही. हेंस ह्यूमन बीइंग्स, जो के वर्कर्स इन दिस केस, कैन नॉट फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ दैट दे कुड हैव ड्रिवन फ्रॉम देयर वर्क एंड फ्रॉम देयर लेबर. द लास्ट part of this theory of alienation is that chunke there are limited number of jobs and there are lots of workers, workers are constantly competing with each other for a job. You will find the other worker as your antagonist rather than a person who is similarly exploited by the capitalist system. तो इस वजह से competitive labor market exist करती है, और इस competitive labor market के अंदर workers are forced to compete with each other for these limited manual jobs, because जो नहीं कर पाएगा manual job वो survive नहीं कर सकता, और इस वजह से they compete with each other. Now this is what Marx calls that this is a deliberate design by the capitalist system कि आपकी workers की class consciousness develop ना हो. Now all the workers according to Marx are exploited by the capitalists as a class. Capitalists are benefiting as a class from the exploitation of the proletariats as a class. लेकिन proletariats को अभी तक class conscious नहीं आ रही कि हमारे साथ ये मेरे दूसरे वर्कर भाई के साथ भी ज्यादती हो रही है, और we need to unite and we need to protest against the capitalist system, because वो constantly system के अंदर एक दूसरे के खिलाफ compete कर रहे हैं. तो ये capitalist system ने इस तरीके से डिजाइन किया इस चीज को ताकि workers unite ना हो सके. So these are the four basic premise and four basic ideas within this theory of alienation. इसको मार्क्स आगे जाके कनेक्ट करता है. आपने इस आइडिया को अच्छे तरीके से रजिस्टर करना है, and we will connect this idea with his theory of how a revolution would come eventually from this exploitation, but that's something that we'll cover in next lecture. तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट है जो इसकी पूरी की पूरी फिलोसफी को समराइज करती है, लेकिन अभी हम उस लार्जर फिलोसफी को हमने पूरी तरह इनकैप्सुलेट नहीं किया, तो विल स्किप दिस. मार्क्स की लेगेसी और उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी, जब हम उसकी अभी जो सब्सिक्वेंट दो और थीरीज हमने डिस्कस करनी है, जब हम वो कर लेंगे तब हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी
डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स. हमने भी मार्क्स की दो और थीरीज कवर करनी है, जिसके अंदर हम उसकी थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर क्या थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसकी लेगेसी और क्रिटिकल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे. Until then, take care and see you guys next time. Welcome back to the Political Science lecture series on Napier, and we're going to continue with the philosophy of Karl Marx. In the last lecture, we discussed the theory of alienation, and today we're going to discuss his concept of historical materialism. Now, Karl Marx was inspired by philosophy of Hegel, और उसने हेगल की philosophy को use करके change किया. But just to avoid complexity in the philosophy or too much philosophization ना हो जाए, हम इसको थोड़ा सा break down करके चलेंगे. So I'm going to focus on Karl Marx rather than providing a lot of context in terms of how Hegelian dialect was converted into Marxist historical materialism. यहाँ पर जब आप historical materialism पे question attempt कर रहे हैं तो theory of alienation की जगह पे historical materialism लिख सकते हैं. You can improvise the charts accordingly. So these are some of the questions that can come Karl Marx के ऊपर. So वो generally भी पूछ सकता है political philosophy में, वो कभी कभी कोई quotation देकर इस पे बात कर सकता है. तो ये सारे questions में more or less same ही बात हो रही है, जो कि हम अभी discuss भी करेंगे. So basically according to Karl Marx, history एक खास process के through गुजरती है और एक खास तरीके से अपने आप को manifest करती है. It is important to mention here that Marx is a teleological philosopher. He believes in teleology. Teleology की सबसे आसान मिसाल ये होगी कि the fate of a seed is to become a plant. अगर आपने कहीं पर कोई बीज बोया है तो it will automatically, eventually will turn into a plant. और इसी के context में Marx ये समझता है, he's part of those broader philosophers who thinks that history progresses in a particular fashion, और हिस्ट्री को हम comprehend कर सकते हैं, उसको हम interpret कर सकते हैं और उसके बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो मार्क्स भी इसी तरीके से teleological philosopher है. That's the first important thing. The second important thing is that he considers, and his analysis is reductionist in the sense that he thinks everything is related to economy, economic structure. So वो हर चीज को economic structure के साथ लिंक करता है, और उसके नजदीक जो हर हिस्ट्री में डिफरेंट एरास गुजरे जिसके अंदर उसने हिस्ट्री को डिवाइड किया, हर दौर में एक क्लास स्ट्रगल रही है बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, दोज हु ओन द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु डू नॉट ओन द मींस ऑफ प्रोडक्शन. द नेचर ऑफ दोज मींस ऑफ प्रोडक्शन चेंज एंड द ओनरशिप ऑफ दोज मींस ऑफ प्रोडक्शन चेंज, बट दिस इज द फंडामेंटल प्रेमिस कि जिसपे वो अपनी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करता है. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स सबसे पहली जो आपको अर्लियर ह्यूमन फॉर्म्स मिलती हैं, दीज आर द ट्राइबल फॉर्म्स, एंड इन ट्राइबल फॉर्म्स देयर आर नो सोशल क्लासेस बिकॉज जनरली आपकी मींस ऑफ प्रोडक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि तब हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज होंगी, हंट करते थे लोग एनिमल्स को या प्लांट्स को गैदर करते थे, एंड दे वर नोमैडिक ट्राइब्स, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. बट ही सेड दैट ओवर टाइम जो एक फॉर्मल क्लास स्ट्रक्चर तो नहीं बना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जरूर हो गया कि बाय वर्च्यू ऑफ देयर alleged physical superiority, men used to hunt animals and women used to either collect plants and they used to do their housework. So they were eventually domesticated. So in this fashion जो मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर हुई और जो सोशल क्लासेस बनी वो ये मर्दों की क्लास और औरतों की क्लास थी, मगर उस तरीके से चूंकि फॉर्मल मींस ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो formal social classes were absent. The second stage in the existence of humankind was the primitive communism. Primitive communism means communion, shared. If you have any problems remembering this concept, or I would also recommend that you go back to the lecture के जहाँ हमने basics capitalism और communism की आपस में compare की थी. तो communism, primitive communism के अंदर there were slowly and steadily several tribes united and they formed smaller cities, और इन तरह की cities में production was very low and everyone was able to provide for themselves.
क्योंकि जो लोग ये कम्युनिटी सेल्फ सस्टेनिंग हुआ करती थी, लेकिन ओवर टाइम इंसान ने अपने टूल्स को, अपनी क्राफ्टमैनशिप को, इन चीजों को इम्प्रूव किया और अपने इनको इम्प्रूव करने की वजह से दे किड द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से फ्रॉम नोमैडिक ट्राइब्स दे बिकेम सेडेंटरी पॉपुलेशंस, दैट इज टू से कि वो एक ही फार्म लैंड पे अपना अनाज उगा सकते थे, अपनी खुराक उगा सकते थे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जन्म लिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि दिस इज माय फार्म, ये मेरा फार्म लैंड है जिसको मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ। दिस इज these are my domesticated animals, these are my cows which I'm using, or buffaloes which I'm using to cultivate these farmlands. तो private property developed for the first time, और जो primitive time में जो equality exist करती थी इस primitive communism में, by the end of the era of primitive communism this gave way to social inequality. So सबसे पहले एक important चीज इसके अंदर ये हुई कि जब आपको farmlands की productivity important हुई, तो इसीलिए स्लेव्स का कॉन्सेप्ट भी, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट भी जन्म लेने लग गया। बिकॉज नाउ हैविंग पीपल इन बॉन्डेड लेबर, इन इंडेंचर्ड सर्विट्यूड और इन स्लेवरी बिकेम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि आपके स्लेव्स आपके लिए आपके फार्मलैंड्स के अंदर काम करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। सो स्लेव्स एंड स्लेव ओनर क्लासेस डेवलप्ड। स्लेव ओनर्स वर दोज हु ओन द मींस ऑफ प्रोडक्शन, लैंड और एग्रीकल्चर वो बेसिकली ओन करते थे, एंड स्लेव्स were the people who did not own the means of production and they used to work on those farms. Third stage is the feudal stage, जो कि यूरोप के अंदर एक पूरा concept मौजूद था. Again, this is something that we have previously discussed in our earlier lectures as well. You can refer back to those lectures. So, our quick summary of what it was. Feudalism was based on two social classes, again in the context of Marx's social और social class struggle की theory के concept में. So they were aristocratic landowners, people who owned lands and farms, and people who did not own lands and farms. These were the peasants. तो इस टाइप के सिस्टम के अंदर लॉर्ड का फार्मलैंड है और उसके ऊपर जो पेजेंट्स हैं जिनको वो सर्व्स भी कहते हैं, तो these serfs used to work, and these peasants and serfs were legally bound to these lands. So उसके ऊपर से जितनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलेगी, उसमें से जितने वो पैसे कमाएंगे, वो सारे के सारे पैसे will go to the landowners, and landowners will give only that amount of money to the serfs जिसके बलबूते पे वो जिंदा रह सके, सर्वाइव कर सके. So इसके अंदर obviously the system was more progressive than slavery system, because अब आपका slave master slave relation नहीं रहा. However, still this was a very exploitative system. तो ये वो यूरोपियन feudalism का सिस्टम है. यहाँ पर knights आएंगे. So kings used to grant land to nobles, nobles used to grant land to knights, knights used to grant protection to peasants. These are the warriors. Peasants would provide food and services to the knights. They would provide protection to nobles. Nobles will in turn provide money and soldiers. With industrial revolution, development of steam engine and large-scale machine production in factories, came the era of industrial capitalism. इस सिस्टम के अंदर जो proletariat class है, जो worker class है, जो हमने भी अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, they are legally free because they are not attached to any of the factories, but in practical sense, because वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, वो अपनी फैमिली को केटर नहीं कर सकते, खुद वो फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन दोस फैक्ट्रीज, एंड सिंस दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन दोस फैक्ट्रीज, इट्स सूडो स्लेवरी, जिस तरह हमने वेज स्लेवरी का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था. सो वर्कर्स डोंट ओन द मींस ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, एंड कैपिटलिस्ट क्लास और द बुर्जुआजी कंट्रोल द मींस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल capitalist system. And this system is economically very productive because mass production of goods and services, it's very efficient in production. मगर ये एक बहुत exploitative और unequal system है in which those who own the means of production, the capitalists, get excessively rich, and those who don't, they remain survival, उनका meager wages पे ही सिर्फ हो रहा है. तो अभी तक समरी हमने किस तरीके से की, वो जो class conflict है वो भी इसी के context में है कि ट्राइबल फॉर्म के अंदर जो हमने सबसे पहले डिस्कस की
क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती थी, सो इट वाज क्लासलेस सिस्टम, एक्सेप्ट के मर्द और औरत के बीच में एक डिस्टिंक्शन शुरू में क्रिएट होना शुरू हुई। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के एंड पे आपका स्लेव ओनर और फ्रीमैन और वर्सेस स्लेव्स का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। सो वन क्लास वाज द स्लेव ओनर्स और द फ्रीमैन एंड द अदर वर द स्लेव्स। फ्यूडलिज्म के अंदर लॉर्ड्स वर्सेस द सर्व्स, और कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। सो सोशल क्लासेस हर दौर के अंदर वर फॉर्म्ड with their relationship with means of production. Hence, the famous quotation by Karl Marx that the history of all hitherto existing mankind is a history of class struggle. कि अब तक इंसान की जितनी हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस है, और हमेशा दो क्लासेस, क्लास exploits the other class and the class who gets exploited by those who own the means of production, इसके ऊपर बेस करती है. Now, using this same थीरी जो अभी तक कंस्ट्रक्ट किया मार्क्स ने, जिसके अंदर वो सोशल क्लासेस के बेसिस पे थीरी डिस्कस करता है हिस्ट्री को, दैट इज कनेक्टेड टू हिज टीलियोलॉजी, कि इसी को यूज करते वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है. इसी बेसिस पे उसने फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया था. तो अभी तक हमारे पास जो समरी है, अभी तक जितनी हमने बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस किए इस थीरी के, वो ये है कि द बेसिस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज हाउ ह्यूमंस वर्क्स ऑन द नेचर टू प्रोड्यूस मींस ऑफ सबसिस्टेंस, जिसकी वजह से इवेंचुअली डिवीजन ऑफ लेबर सोशल क्लासेस में अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिलेशनशिप विद द मींस ऑफ प्रोडक्शन और हु ओन्स द प्रॉपर्टी एंड हु डजंट. ओवर टाइम सबसे पहले जैसे स्लेव ओनर्स और स्लेव्स थे, दे वर ओवर टाइम replaced by another different sets of classes by the new emerging classes such as feudals and the serfs or peasants. और उसके बाद feudals और peasants के बाद वो this was replaced by another set of social classes which was industrial capitalists, the bourgeoisie and the proletariats. So वो ये कहता है कि ये, by the way, ये superstructure की theory हम separately discuss करेंगे, so then you will understand what this means. तो इसी को यूज करते हुए थ्योरी को वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता है. वो ये कहता है कि देयर इज अ क्राइसिस विद इन द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म. व्हाई? बिकॉज जो कैपिटलिज्म का प्रेमिस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, दिस विल लीड कैपिटलिस्ट्स कि वो कभी भी वर्कर्स को कोई कंसेशन नहीं देंगे. दे विल कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट देम, और वो उनकी हड्डियों का गूता तक निकाल लेंगे और वो उनको बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको कभी कोई फेवर्स नहीं देंगे, जिसकी वजह से there will come a tipping point because workers will be so exploited and they will be alienated. वो alienation की चारों चीजें जो हमने डिस्कस की थी, that eventually they will be unite, they will develop a class consciousness, they will recognize that we as a class are being exploited by the capitalist and they will lead a revolution. और उस revolution के नतीजे में वो capitalist निजाम को overthrow कर लेंगे. और overthrow करने का मतलब है कि वो एक अपनी रियासत, वो स्टेट के हर रिसोर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जिसको वो कहता है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, व्हिच मींस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द मींस ऑफ प्रोडक्शन विल बी कंट्रोल्ड बाय द वर्किंग क्लास. नाउ इंडस्ट्रीज विल बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द वर्कर्स. और वो जो डिक्टेटरशिप जो कायम होगी प्रोलेटेरिएट की, इधर वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को नेगेटिव सेंस में यूज नहीं करा, पॉजिटिव सेंस में करा, बिकॉज द वर्किंग क्लास इज मार्क्सिस्ट चोजन क्लास. तो मार्क्स ये कहता है कि वो जब वर्किंग क्लास आकर अपनी कब्जा करेगी इन सारे फैक्ट्रीज पे, तो इफेक्टिवली सारी वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी रिसोर्सेज की. सो देयर विल बी अ मास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, एंड इफेक्टिवली ये होगा कि एवरीवन विल बिकम इक्वल. When everyone will become equal, तो स्टेट की जरूरत नहीं रहेगी. The state would quote and quote, as Marx say, would wither away, and effectively at the end you will create a moneyless, classless, stateless society, which will be the pure form of communism. तो ये basically मार्क्स की theory है of historical materialism, social class conflict की theory. अगर हम इसको समरी करें तो बेसिकली यही, अब पूरे उसको समराइज इस तरीके से किया जा सकता है कि कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी मेक्स समथिंग इनटू कमोडिटी, जिसकी वजह से एलियनेशन होती है. एलियनेशन इतनी ज्यादा होगी कि इफेक्टिवली एंड पे वर्कर्स जो है बड़े बोल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और कम्युनिज्म एस्टैब्लिश होगा. और कम्युनिज्म इज द रिडल ऑफ हिस्ट्री सॉल्व्ड, दैट इज मार्क्सिस कोटेशन, कि इफेक्टिवली फिर वो जो क्लासेस की डिस्टिंक्शन हिस्ट्री में हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है वो खत्म हो जाएगी.
मार्क्स की लेगेसी बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स राइट्स। वर्कर्स ने जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेस्ट करना शुरू किए और यूनियंस बनना शुरू की, बिकॉज मार्क्स की राइटिंग्स आहिस्ता आहिस्ता बहुत फेमस हुई प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, मैस पब्लिकेशन शुरू हुई, उसकी किताब दास कैपिटल बहुत फेमस हुई, तो उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, दे वन अ लॉट ऑफ फेवर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम। चाइल्ड लेबर आहिस्ता आहिस्ता अबॉलिश हुई, वीकेंड्स का कॉन्सेप्ट आया, मैटरनिटी लीव्स का कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड वर्किंग आवर्स का, सेफ वर्किंग कंडीशंस का कि वर्कर्स जिस एनवायरनमेंट में काम करें वो एनवायरनमेंट सेफ हो, मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आया। तो ये सारी चीजें दीज वर इंट्रोड्यूस्ड। इन other aspects it effectively even did lead to political revolutions. So for instance, लेनिन ने सोवियत यूनियन के अंदर रेवोल्यूशन इस पैटर्न पे लेके आया, माओ जेडोंग के टाइम पे चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आई। तो ये सारी की सारी बोल्शेविक रेवोल्यूशन लेनिन की, इट एस्टैब्लिश्ड द यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स रिपब्लिक, और कोल्ड वॉर हमें नजर आती है, फाइट बिटवीन कैपिटलिस्ट यूएस एंड सोशलिस्ट यूएसएसआर। चाइना के अलावा क्यूबा के अंदर ये रेवोल्यूशन आई, नॉर्थ कोरिया, फॉर्मर यूगोस्लाविया, दीज वर कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो दिस इज हाउ मार्क्स impacted political systems of the world. In areas where it did not influence such radical overthrow of the state structure, in other parts उसके ideas ने काफी tempering effect दिया कैपिटलिज्म को। सो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह जैसी कंट्रीज में आप ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म को ह्यूमनाइज किया, क्योंकि दे रिकॉग्नाइज द हॉरर्स दैट एन अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म कुड इन्फ्लिक्ट अपॉन पीपल। हेंस दिस वाज टेम्पर्ड with these social protections and other welfare systems. So in that fashion, this is also Marx's impact. अगर हम मार्क्स की क्रिटिक करें तो बहुत ज्यादा हमें इस पे कंटेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो कार्ल पॉपर ने अपनी किताब ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसके अंदर मार्क्स को प्रमोट इस बात पे क्रिटिक किया कि इट प्रमोट्स टोटलिटेरियनिज्म, दैट स्टेट दैट मार्क्स envisions और encourages के डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट आए, वो सारी इंडस्ट्री को कंट्रोल करे, वो फिर मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करे और वो डिसाइड करे हु विल गेट हाउ मच शेयर। इसको कहते हैं एक टोटलिटेरियन स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपर, और वो कहता है कि इसके लिए एक बहुत ही अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक स्टेट बनेगी, एंड व्हेन सच एन ऑटोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन स्टेट वुड बी फॉर्मुलेटेड, तो उसके नतीजे में अवाम के राइट्स और लिबर्टीज बहुत ज्यादा हर्ट होती हैं। और इसकी क्लासिक एग्जांपल जोसेफ स्टालिन की यूएसएसआर में जो हुकूमत थी, जिसके टाइम में रेन ऑफ टेरर कहते थे, जब हर किस्म की पॉलिटिकल ऑपोजिशन को एक्सटर्मिनेट किया गया, लोगों को साइबेरिया के पहाड़ों में भेज दिया जाता था गवर्नमेंट से इख्तिलाफ करने में, जो सोशलिस्ट सिस्टम को चैलेंज करता था उसको मार दिया जाता था। उसके अलावा हर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो Karl Popper despises that, which is obvious because he's a liberal democrat. Second critique is that the kind of system that it wants to create, Marx, it's undemocratic. The both political and economic systems के हर बंदे की freedoms इस तरह के system में नहीं रहती। तीसरी चीज ये कि by the way fix these numberings, वो ये कि मार्क्स ने इन्विजन नहीं किया था फ्यूचर में कि डायनामिक्स लेबर की चेंज हो जाएंगी। सो फॉर इंस्टेंस इन मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड और tech and entrepreneurship world, there is no ownership of means of production, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदा ही ownership है उसकी means of production की और दूसरे की नहीं है। So in digital world हमें ये चीजें नजर नहीं आती। बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में क्लास की बेसिस पे आइडेंटिटी से एसोसिएट नहीं करते, बल्कि वो there are multiple identities that they associate with, identity of gender, ethnicity, race, कल्चरल बैकग्राउंड। पांचवी चीज ये कि मार्क्स फेल टू इन्विजन कि कैपिटलिज्म वुड अडैप्ट विद चेंजिंग नीड्स। मार्क्स ने कहा था कैपिटलिज्म कभी नहीं देगा कोई भी किस्म के कंसेशंस वर्कर्स को, लेकिन कैपिटलिज्म डिड रियलाइज दिस। शायद जिस तरीके से दास कैपिटल वर्कर्स ने पढ़ी तो कैपिटलिस्ट ने भी पढ़ी होगी, और इन प्रोटेस्ट वगैरह के नतीजे में ये चीजें कैपिटलिस्ट्स ने वर्कर्स को दी, जो कि मार्क्स समझता था कि कभी कैपिटलिज्म नहीं देगा बिकॉज वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है और वो प्रॉफिट रिड्यूस नहीं करना चाहता। बट कैपिटलिस्ट वर स्मार्ट, दे अडैप्टेड ओवर टाइम। एंड फाइनली दैट अ ट्रू कम्युनिस्ट स्टेट वाज नेवर क्रिएटेड। जो मैक्सिमम आई वो यहाँ तक आपकी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, एक सोशलिस्ट कंट्रीज दुनिया में आई, एक क्लासलेस कम्युनिज्म दुनिया में कभी नहीं आया। तो
This is Marx in a nutshell and his theory of historical material system. In next lecture, we'll briefly discuss his concept of base and superstructure. See you guys next time. Guys, today we're going to discuss Karl Marx. This is the third lecture on Karl Marx और इसमें उसकी हम discuss करेंगे his concept of base superstructure ideology की जब वो बात करता है. So कार्ल मार्क्स कहता है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. One is the economic base and the other is the superstructure. Economic base basically वो तमाम चीजें which are needed to produce things. These are all the this is the means of production जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं and the relationship that people have with the means of production. और एक चीज होती है superstructure. Superstructures are things which have nothing to do with the production of economic resources. These are values, cultural norms, ideologies, expectations. ये वो उन चीजों को superstructure कहते हैं. तो ये उसका जर्मन basically नाम है जो कि मार्क्स ने दिया था. So Marx said the society is classified into an economic base and a superstructure. In superstructure, all these ideology, things that we take as common sense, in which there's family values, education system, religion, media, political systems, ये सारी चीजें. मार्क्स की थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक बेस है वो शेप करता है आपके सुपरस्ट्रक्चर को, एंड द रिलेशनशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक बेस किस किस्म की है उसके बेसिस पे आपका सुपरस्ट्रक्चर बनता है, उसकी बेसिस पे वैल्यूज नॉर्म्स बनती हैं, एंड दीज वैल्यूज नॉर्म इन टर्न मेंटेन एंड लेजिटिमाइज द इकोनॉमिक बेस. वो उस इकोनॉमिक सिस्टम को रीइंफोर्स करता है. सो इट्स अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिस्टम. तो वो बेसिकली यही कह रहा था कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मुआशरे को इस तरीके से सोशली इंजीनियर करता है कि जितने सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, लॉ, कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सारी चीजें लोगों में एक टेसिट एक्सेप्टेंस क्रिएट करती हैं टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम, एंड दिस इज व्हाट मार्क्स कॉल्स के हाउ द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज एबल टू एक्सप्लॉइट पीपल फॉर इन परपेचुइटी. सो ये जितने डिफरेंट तरीके के आपके सुपरस्ट्रक्चर के वैल्यूज हो सकती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिक्स, लॉ, सोशल नॉर्म, कल्चर नॉर्म्स, आपकी रीजनिंग कैपेसिटीज, इवैल्यूएटिव पावर्स, ये सारी की सारी आपकी सुपरस्ट्रक्चर का हिस्सा होती है. अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? इसकी एग्जांपल इस तरीके से हो सकती है कि फॉर इंस्टेंस आप अगर हमारे मुआशरे में देखें नोशन ऑफ सक्सेस, तो मार्क्स के मुताबिक चूंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैपिटलिस्ट है तो नोशन ऑफ सक्सेस भी यही होगा फिर कि किसके पास ज्यादा पैसा है. सो ही हु ओन्स मोर वेल्थ विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल. इट वुड नॉट मैटर कि उस बंदे की दूसरी वैल्यूज क्या हैं, मगर उसकी हिज एबिलिटी टू एक्यूमुलेट वेल्थ विल बी कंसिडर्ड हिज सक्सेसफुल ट्रेड. तो इसी तरीके से वो ये कहता है कि एक तो वैल्यूज इस तरीके से सेट होती हैं, और इसकी वजह क्या है? देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस व्हिच यू कैन ऑब्वियसली राइट. फर्स्ट इज दैट कैपिटलिस्ट क्लास हैव रिसोर्सेज टू क्रिएट दीज वैल्यूज. तो आपके कैपिटलिस्ट क्लास के पास चूंकि रिसोर्सेज हैं, पैसा उनके पास होता है, सो इसी वजह से वो मीडिया के अंदर, पॉलिटिक्स में भी ये लोग आते हैं. जैसे यूके की एग्जांपल आप लें तो जब अर्लियर टाइम्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सारे के सारे अमीर लॉर्ड्स हेरिडिटरी हुआ करते थे, तो लॉज भी वो लोग बना रहे हैं, मीडिया में भी वो लोग अपना नैरेटिव दे रहे हैं, न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन भी उनकी मर्जी की हो रही है. सो हेंस कैपिटलिस्ट क्लास वैल्यूज क्रिएट कर रही है, वो अपनी मर्जी की, दे क्रिएट वैल्यूज ऑफ सोसाइटी इन देयर इमेज. एंड सेकेंडली कि चूंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम डोमिनेंट है तो उसी के नतीजे में उसी की मर्जी के मुताबिक वो वाली वैल्यूज आएंगी जो उसको मेंटेन कर सकें. तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, मीडिया पे लोगों को इस तरीके से इंजीनियर किया जाएगा कि ताकि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करें और इसमें कंट्रीब्यूट करें, जिसका इवेंचुअली फायदा उसी कैपिटलिस्ट क्लास को होगा. सो जितने नोशंस हैं हमारे सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वो इसी के गिर्द बनाए गए हैं. तो फॉर इंस्टेंस चूंकि अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो व्हाइट पीपल हैड ओन्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर हम मार्क्स की थ्योरी को अप्लाई करें ये वाली,
तो we'll see के since white owned the means of production और एक capitalist system के अंदर, hence माशरे में एक dominant view भी पाया जाता है कि white people are intellectually more superior. इसी तरह जो meaning of life हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, ये सारी चीजें भी consumerist culture और capitalist culture के अंदर आ गया हुआ है कि to make as much money as possible, to have as much property as possible, which effectively helps the capitalist class grow further rich. तो ये बेसिकली आपने इसको लार्जर आइडिया से अगर आप कनेक्ट करें, हम जितना भी अब तक डिस्कस किए, तो मार्क्स कनेक्ट्स एवरीथिंग विद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो मार्क्स की थ्योरी में देयर इज गोइंग टू बी मींस ऑफ प्रोडक्शन, हु कंट्रोल दिस मींस ऑफ प्रोडक्शन, हु डू नॉट कंट्रोल दिस मींस ऑफ प्रोडक्शन, the former will always exploit the latter. And this relationship is going to determine everything. Society की values, history की progression, everything is connected to the economic structure of the time. तो इस वजह से Marx is reductionist in his economic analysis as well. And one of the critiques that you can add, जो कि हमने अपने पिछले स्लाइड में लेक्चर में ऐड नहीं की, is that Marx हर चीज को इकोनॉमी से रिलेट कर देता है. वो हर चीज को वो फीडबैक पाथ नहीं देखता कि कभी कभी इट्स नॉट दैट द बेस इकोनॉमिक बेस वैल्यूज क्रिएट करती है. समटाइम्स देयर इज अ वैल्यूज दैट क्रिएट द इकोनॉमिक बेस. दिस इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम द बेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वैल्यूज, एंड आल्सो दैट डायरेक्टली फ्रॉम वैल्यूज यू कैन चैलेंज द बेस. तो मार्क्स की सजेशन तो यही है ना कि चूंकि वैल्यूज और सुपरस्ट्रक्चर इज ऑलवेज गोइंग टू लेजिटिमाइज द इकोनॉमिक बेस, हेंस मार्क्स की रेसिपी जो कि हमने पिछली दफा डिस्कस भी की थी, उसका सोल्यूशन यही है कि वर्कर्स शुड टेक कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्रीज एंड दे शुड ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बेस को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, फैक्ट्रीज को वो ओवरकम करें तो ही वो वैल्यू सोसाइटी की चेंज कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू. मार्क्स खुद जो काम कर रहा है बाय राइटिंग दिस बुक, by giving this philosophy, by inspiring people, he is not addressing this problem. He himself is trying to change the value system of society. So his own theory in that regard is contradictory to what he's proposing. But broadly, this can be important critique on this concept of Marx. This is all on Marx. ये तीनों questions अगर आप एक sequence में करें, इनको समझ के करें, तो अगर किसी भी किस्म का कार्ल मार्क्स पे सवाल आता है, तो you guys will be able to do it. I'll see you guys next time.